we were doing lesson 6, Albert Einstein at school by Patrick Pringle. Already we had done number of points so far as this chapter was concerned. We had done introductory part, that was uh, he was physicist. He was against cramming, and this particular chapter is taken from the big book, The Young Einstein. It is written by a very fine biographer, Patrick Pringle. So I had already announced you people the real meaning of biography, biographer, autobiography. I think you are crystal clear about each and every point. He was expelled from German school because his attitude was not up to mark. He used to look at the things in negative order. He used to interact with teacher in a very negative way. And if we look at the real point, he was very right. So that is why he had become a very fine scientist, a very fine physicist. Now let us start today's assignment. That is, we have to look at uh, page number 26. You must open your books on page number 26, dear students. Now be in continuity with what we were doing. So in that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Now just look at the meaning of it. History teacher was speaking with heavy sarcasm. If we look at this particular word, sarcasm is while we are just making fun of somebody. So he was just highlighting that particular point. Perhaps you will be so kind to tell the class the Einstein theory of education. Here he wanted to highlight the point कि शायद तुम क्लास को आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एडुकेशन बताने जा रहे हो. I think you are crystal clear up to this particular point. At this particular stage, teacher was quite irritated to look at the way of talking so far as Einstein was concerned. Now look at the next, Albert flushed. Already told you the meaning of flushed. While the person changes his or her color due to hesitation, due to extreme level of surprise, and here Albert became very different to look at the dialogue of his teacher. That is, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education, because at that moment he was a small child. So that is why he was flushed. The color of his face changed. Flush का मतलब होता है, already I have told you people, कि जब color change हो जाता है skin का due to hesitation, due to surprise, and number of, I think, exclamatory signs make us flush. So I think you are crystal clear up to this particular meaning. Add it into the dictionary of your brain. Now look at the next. I think it's not the facts that matter, but ideas. He said, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. Just look at this particular dialogue. So here Einstein wanted to clarify that particular point, that he was strict believer of the base. Base you are able to understand. I think it's not fact that matter, but ideas. He wanted to highlight the point that facts doesn't matter. If we learn and cram the facts, never gives us further knowledge. It is just a cramming. तो यहाँ पे आइंस्टाइन जी कहना चाह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है जो हम लर्न करते हैं फैक्ट्स की बैटल ऑफ पानीपत वाज won at the particular date, and whatever the battles were concerned, or historical facts, learning of historical facts or general facts, just a wastage of time and energy. He wanted to highlight that point, that he loved ideas. I don't see the point in learning the dates of battles. He wanted to highlight the point that he never see any logic behind learning the dates of battles, or even which of the armies killed more men.
Automatically, he wanted to highlight the point that he least bothered to look at that particular fact when any battle was fought. And second point, you have to look at even which of the armies killed more men. He was least bothered about the point uh, that which of the armies were able to look at the success, which army was successful. तो यानी if we look at this particular dialogue in Hindi, you have to look at तो यहाँ पे वो आइंस्टाइन चाह रहे हैं कि मुझे लगता है जो हम लर्न करते हैं, क्रैम करते हैं कि कोई भी लड़ाई कब हुई, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको उसके फर्दर जो है रेक्टिफिकेशन उससे कुछ नहीं हो सकती. आइडियाज जो होते हैं, इट प्लेज अ ग्रेट रोल. तो आइडियाज जो है फर्दर हमें रिकॉग्निशन बताते हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल टू सेव ourselves from any type of war. So I don't see the point in learning the dates of battles. He wanted to highlight the point that he never looked at any logic to learn the dates of battles. कि हम अगर fact learn करते हैं कि battle of Panipat was just fought on that particular day, a number of battles we study in history. So I think he wanted to highlight that point that it can be read from the book directly. And there is no logic of cramming. Or even which of the armies killed more men. He was least bothered to highlight that particular point. That was even never be careful to look at that particular point that which army was winner. So I think crystal clear. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. He wanted to highlight that particular point that he was keenly interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. So he wanted to highlight this particular point in a very detailed way. यहाँ पे आइंस्टाइन जी कहना चाह रहे हैं कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड है कि क्या कारण था कि सोल्जर्स एक दूसरे को मारने के लिए रेडी थे. तो उससे क्या होता है, आई थिंक लॉजिक कैन बी क्लैरिफाइड, एंड इफ logic will be at our forefront, automatically further in future we are very careful about wars and whatnot. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good, it won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. Now, at this particular point, Mr. Brown, his history teacher, became irritated to look at the way of discussion so far as Einstein was concerned. So here, Mr. Brown became very irritated. That's enough. He was highlighting this particular point in irritation कि बेटा हद कर दी तूने. Now stop it. So his eyes were cold. If we look at this particular word cold, it means full of hatred and cruel. So automatically, if we are arrogant and full of hatred, our attitude becomes cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. Teacher was speaking in a very irritating tone that he never wanted, or the class never wanted lecture from him. यानी कि यहाँ पे उनके टीचर जो हिस्ट्री टीचर है मिस्टर ब्राउन इरिटेट हो चुके हैं उसके वे ऑफ टॉकिंग को देख के, उसके वे ऑफ डिस्कशन को सुन के. ऑटोमेटिकली ही वांटेड टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि बेटा हम आपसे लेक्चर नहीं सुनना चाहते, तो you will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. Here Mr. Brown was giving instruction that he would have to stay for one more period. That was his punishment. तो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन उनके हिस्ट्री टीचर बेटा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी पनिशमेंट यानी कि आइंस्टाइन की पनिशमेंट है कि he would have to attend one more period, and teacher was also adding a point that that particular punishment would not be able to rectify his attitude. और अगर एक्स्ट्रा इसको बिठाते भी हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला. It won't do the school any good either. Here the teacher wanted to highlight the point that punishment of
Just attending extra period will be useless even for Einstein and even for the school because he was not interested to learn. You are a disgrace. We look at disgrace word, it is bloat. इसको कहते हैं ना कि नेगेटिव साइन, नेगेटिव सिंबल. कहते बेटा तुम इंसल्ट हो. आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम. तो यहाँ पे इरिटेशन में टीचर जो है स्पीकिंग वेरी हार्श लैंग्वेज. He was highlighting the point that he didn't understand why he continued to come to school. I think you are crystal clear so far as this these dialogues of Mr. Brown are concerned. So I think you are crystal clear. So I want to just explain it again. तो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन बहुत इरिटेशन में है क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग जो है स्टूडेंट का यानी कि आइंस्टाइन का प्रॉपर वे से नहीं है. एवरी टीचर वांट्स रिस्पेक्ट. तो यहाँ पे रिस्पेक्टिबल वे से वो आइंस्टाइन जी बात नहीं कर रहे. तो यहाँ पे टीचर इरिटेशन में कह रहे कि बेटा हद कर दी, अब चुप हो जा. और पनिशमेंट क्या अनाउंस की टीचर ने कि उसको एक एक्स्ट्रा पीरियड और स्टडी करना पड़ेगा. अर्लियर टाइम स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट पनिशमेंट टू लुक एट द सेम पॉइंट कि पिछले जमाने में जब पनिशमेंट मिलती थी एजुकेशन में, स्टूडेंट्स विल हैव टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस. दैट वाज यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज वेरी फाइन पनिशमेंट. और साथ में टीचर जो अनाउंस कर रहे हैं कि इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला ना स्कूल का ना यानी आइंस्टाइन का. साथ में वो ऐड कर रहे हैं कि यू आर अ बिग ब्लॉट. तो एक तरह से कलंक है, नेगेटिव है. और साथ में बहुत हार्श लास्ट डायलॉग है कि तू कंटिन्यूटी में स्कूल क्यों आ रहा है. अगर तुझे स्कूल के रूल रेगुलेशंस पसंद नहीं है, नॉर्म्स पसंद नहीं है, तो यू मस्ट क्विट. Here the teacher is 100% right because no student possesses right to speak in harsh tone with the teacher. It's not by wish, sir, Albert pointed out. Just look at reply of Albert was saying that he never wanted to attend the school. यानी वो कहना चाहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्कूल में आने का. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Our teacher became irritated again. He was very harsh while he was speaking, highlighting that particular point that Einstein was an ungrateful guy. Ungrateful होता है unthankful. जो धन्यवाद ना करे, ungrateful. Grateful word GRATEFUL होता है thankful. Ungrateful कहते हैं the person who is least bothered about the respect of anybody. चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसका जो आउटकम होता है that is not up to mark. And ought to be ashamed of yourself. Here the teacher wanted to add on that he must be ashamed of himself. But if we look at this model that is ought to, so is used to highlight serious moral responsibility, serious moral duty. तो ये कोई नहीं सिखाता, ये हमें अपने मन से ही उठती है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर मॉडल, we must respect our parents. That can be highlighted with this particular model. We ought to respect our parents. It depends upon the level of respect we can give. It varies from child to child, person to person. I suggest you ask your father to take you away. Just look at the dialogue of Mr. Brown. He became extremely irritated. तो कहते हैं कि बेटा अपने पापा को बोलो कि यहाँ से ले जाए, कि यहाँ तुम स्कूल में हो भी तो देयर इज नो यूज. अगर तुमने पढ़ना नहीं है, क्लास को इरिटेट करना है और बिना बात के आपने अपने आर्गुमेंट देने हैं, तो इट विल बी बेटर इफ यू वुड जस्ट आस्क योर फादर टू टेक you away. I think I'm just speaking in direct tone. You is used if we are looking at direct speech, and if we convert it into indirect, automatically him will be there. Now look at the next. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning.
Just look at the attitude of Albert Einstein. So Albert felt miserable. Miserable means irritated, upset, sad. So Albert had become very sad on that particular day when he left the school that afternoon. So after dispersal, while he had left the school, he was in irritation. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway. But because he had to go back to the hateful place the next morning, उसको इरिटेशन इस बात की नहीं हो रही थी कि हाँ कि बहुत बुरा दिन था आज स्कूल में, मेरा टीचर ने मुझे डांटा, टीचर ने यानी कि अच्छे तरीके से बिहेवियर नहीं किया. बेटा रिस्पेक्ट begets respect, and respect cannot be demanded, it can be commanded. If we do our assignments in a proper order, automatically we will get respect. So here Albert was very irritated while he reached where he was staying. तो कारण ये नहीं था कि आज उसको टीचर ने डांटा था इसलिए इरिटेशन में था. कारण ये था कि बहुत से दिन उसके नेगेटिव होने वाले थे, क्योंकि एक बार अगर टीचर इरिटेशन में आ जाता है, थिंग्स बिकम वेरी नेगेटिव. Most days are bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, उसको इरिटेशन बेसिक पॉइंट की क्या थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन ही हैड टू गो टू स्कूल, कि कल भी स्कूल जाना है. इरिटेशन इसकी थी क्योंकि एक बार अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, ऑटोमेटिकली नोबडी कैन रिस्पेक्ट अस. तो इस पॉइंट को सोचते हुए उसको लग रहा था कि बहुत जो फ्यूचर के दिन है मेरे लिए नेगेटिव ही आने वाले हैं स्कूल में, बिकॉज हिज लैंग्वेज वाज क्वाइट हार्श व्हाइल ही वाज इंटरैक्टिंग विद मिस्टर ब्राउन. और उसको इरिटेशन का मैक्सिमम जो पॉइंट जो था, आई थिंक जो डीपेस्ट पॉइंट था उसकी नेगेटिविटी का या इरिटेशन का, वो था कि उसको कल भी वहीं जाना था स्कूल को. ही नेवर वांटेड टू गो टू स्कूल, ही वांटेड टू क्विट द स्कूल इमीडिएटली. ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग. So his only desire was that his father must take him away from that particular school. उसकी इच्छा ये थी कि उसके पापा उसको स्कूल से ले जाए, because he wanted to quit the school, but there was no point in even asking. He was afraid of his father. He was 100% sure that his father would not say yes to that particular demand. पता था कि उनके पापा अफर्मेटिव में आंसर नहीं देंगे अगर ये कहेगा कि मुझे स्कूल से ले जाओ, मैं स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. He was 100% sure the reply of his father. उसको पता था कि उनके पापा क्या आंसर देने वाले हैं, तो उनके पापा का आंसर क्या, यानी he was just predicting कि क्या होगा. He would have to stay until he had taken his diploma. यानी कि उसके पापा कहेंगे कि बेटा तुझे स्कूल में पढ़ना होगा तब तक जब तक तेरा डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता. Because every parent want child to study from the core of his heart. No parents want that their children quit the school. So automatically we have to learn a great moral value here, great life skill here, that we must respect our teacher. We possess right to interact, we possess right to talk, but I think we must be polite while talking. Note down this life skill, dear students, very, very important. So next, we have to look at the next paragraph. Going back to his lodgings didn't cheer him up. वो lodgings होता है बेटे जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो रहता था. Was just staying by taking one room as a rent. वहाँ उसने एक रेंट पे कमरा लिया हुआ था. लॉजिंग्स होता है जहाँ पे हम रहते हैं, रेजिडेंट प्लेस जो होती है. तो वहां पे जब लॉजिंग्स में जाता था वहां पे भी उसको इरिटेशन होती थी. Didn't cheer him up because he was not satisfied where he was residing. जहां वो रहता था उसको वहां पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich.
So his father was so little money. He belonged to a middle class family. We can say that lower middle class family. The financial status of his father was not very high. So we have to look at this sentence. His father had so little money. So little, you are able to look at, this is determinant. Little, a little, the little. I think it is used for uncountable nouns. Little होता है hardly any, ना के बराबर. A little होता है some. The little होता है ना भी हमारे quantity available होती है. Already I have told you that is used for uncountable noun. यहाँ पे little मतलब hardly any. He was with very least amount of money. ये पॉइंट हाईलाइट करता है कि उनके पापा जो थे वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे. To spare that, Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. बच्चे की एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया था, उनको रूम रेंट पे लेके दिया था आइंस्टाइन को. और वो बहुत ही घटिया टाइप का क्वार्टर था मुनीक में, क्योंकि पेसिमिस्टिक कॉलोनी में क्वार्टर मिला था उसको. रीजन बिहाइंड दैट वाज ही वाज नॉट एबल टू पे वेरी फाइन रेंट. तो रेंट ज्यादा नहीं पे कर सकता था वो, इसलिए उनके पापा ज्यादा रेंट नहीं पे कर सकते थे, इसलिए उनको बहुत ही यानी कि कहते ना कि पेसिमिस्टिक एरिया जो था वहां पे उनको क्वार्टर उसने रेंट पे लिया था. तो यू हैव टू लुक एट क्वार्टर में एक रूम लिया था. ही हैड रेंटेड अ सिंगल रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनीक. इफ वी लुक एट दिस वन ऑफ, आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर. वन ऑफ द, यानी कि देयर वर नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलोनी. तो जब भी हम बेटे वन ऑफ यूज करते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स, दैट इज ऑलवेज विद प्लूरल नाउन. क्वार्टर्स, वन ऑफ द क्वार्टर विल बी रॉन्ग. बड़ा घटिया सा उसका जो क्वार्टर था उसमें उसने एक रूम रेंट पे ले रखा था, बिकॉज his father was not able to pay in a decent way. He didn't mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. Actually, that was slum area. Einstein didn't mind bad food. He was not able to get proper food over there because that was a poor place to live. And he was not able to get proper, comfortable environment there. And he was just residing the dirt and dust. Squalor होता है pessimistic place जहाँ पे बहुत गंदगी होती है. But he hated the atmosphere of slum violence. He used to hate the atmosphere of slum violence. Slum, you are able to look at the things कि हटमेंट्स होती हैं जो यहाँ पे नेगेटिव टाइप के लोग रहते होते हैं, जो वायलेंस क्रिएट करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं. वायलेंस होता है जब इंसान फिजिकली लड़ाई झगड़ा करते हैं. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and even beat her. So just look at the environment he was residing. He had gone over there to study, but he was not able to study properly over there due to the worst environment where he was residing. तो रीजन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उनके पापा ज्यादा फंड स्पेयर नहीं कर सकते थे कि उसको एक अच्छी कॉलोनी रूम ले दें या अच्छे क्वार्टर में रूम ले दें. तो जो लैंडलेडी कहते हैं कि जिसका क्वार्टर था, जिस क्वार्टर में उसने रूम ले रखा था, तो शी वाज वेरी नेगेटिव टाइप ऑफ लेडी. यानी कि स्लम एरिया था वो एक तरह से, जो स्लम पीपल यूज टू वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी इन यूजलेस क्वर्स और आई थिंक वायलेंस. तो वहां वो क्या करती थी लैंडलेडी, अपने बच्चों को रोज मारती थी. शी यूज्ड टू बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट नेगेटिविटी. एवरी सैटरडे, हर सैटरडे उस लैंडलेडी का हस्बैंड आता था, शराब पी के ड्रंक होता है जब ड्रिंक करके आते हैं, और उस लैंड लेडी को फिजिकली, यानी यू हैव टू लुक एट द थिंग्स, हैरास करता था और उसको यानी कि मारता था. I think crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that. So now just look at the next paragraph in a very systematic way.
Just look at inverted commas. We're just going to study the dialogue of Yuri, his cousin of Einstein. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. Just look at these two dialogues. One dialogue is just spoken by Yuri, his cousin. So, but I have already told you while we look at this particular word, cousin is highlighted. Cousin only. We possess no right to look at cousin brother or cousin sister. No. From the next part of the sentence, we are able to recognize whether uh, male or female is there. Cousin is used alone. You must add it into the dictionary of your brain. It is a very fine concept. But at least you have a room of your own, which is more than I can say. Here, Yuri was just highlighting that particular point while he visited him in the evening. यूरी जो उसके कजन थे वो आए हुए थे उनके घर में जहां पे वो रहते थे इवनिंग में उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन कि तू लकी है फिर भी अपना रूम तो है ना तेरे पास विच इज मोर देन आई कैन से कहते ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि इतनी कैपेसिटी भी नहीं है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस ये कहता था कि दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ही वाज नॉट एबल टू लुक एट द रूम ऑफ हिज ओन कि कहीं शेयरिंग बेस पे तो नहीं रह रहा तो शेयरिंग बेस पे रहना बहुत मुश्किल होता है तो इसीलिए यूरी कहता है कि आइंस्टाइन तेरे पास अपना रूम तो है ना ये बहुत बड़ी बात है तो which is more than I can say. I think crystal clear so far as this particular point is concerned. And just look at the reply of Einstein at that particular point. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. Now, just he was, Albert Einstein was replying Yuri. Now, just look at this. बस हाईलाइटिंग कि कम से कम तेरे पास जहां पे रेजिडेंशियल प्लेस है तेरी जहां तू रहता है जहां तेरी लॉजिंग्स है वहां कम से कम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं ना ऐसे घटिया लोग तो नहीं रहते ना इवन इफ दे आर पुअर और ऑल पुअर स्टूडेंट चाहे सब गरीब हैं लेकिन सिविलाइज तो हैं तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ये पॉइंट हाईलाइट करता है कि जो यूरी था वो भी कहीं पीजी बन के रहता था और वो शेयरिंग बेस पे जो उसने रेंट पे एकोमोडेशन ले रखी थी शेयरिंग बेस आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर जैसे हम एक रूम में 2 और 3 स्टूडेंट्स कैन स्टे अगर हम स्टडी के लिए जाते हैं तो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं एडुकेटेड होते हैं कम से कम जो कि वायलेंस क्रिएट नहीं करते तो यानी here Einstein wanted to highlight that particular point he was quite unhappy where he was residing. Now just look at the next dialogue. They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? Now first of all just look at the meaning of duel. If we look at the meaning, duel means the fight between two people. जब physical violence create होती है दो लोगों में दो लोग हो गए जब दो पार्टीज हो गई जब हम लड़ाई झगड़ा होता है दो पार्टीज में या दो लोगों में now just look at this particular dialogue they are not all civilized Yuri replied यूरी ने आइंस्टाइन ने जो बोला था उसका रिप्लाई बड़े फाइन वे से किया कि नहीं बेटा सारे सिविलाइज्ड नहीं है आइंस्टाइन सारे सिविलाइज्ड नहीं है कि तू गलत फहमी में है तूने सुना नहीं था कि that one of them was killed last week in a duel कि जहां मैं रहता हूँ वहां पे एक बच्चे की डेथ हो गया था क्यों कि दो लोगों में लड़ाई हुई और जिसके कारण one of them was killed so automatically he wanted to highlight that particular point Yuri his cousin wanted to highlight point that where he was residing was not a very fine place now just look at the next dialogue and what happens to one who killed him
You just look at the query of Einstein. आइंस्टाइन जो है पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यूरी ये बता, जिसने उस बच्चे को मारा उसका क्या हुआ, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया, क्या उसकी हालत है इस टाइम पे? नथिंग, ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. जस्ट लुक एट रिप्लाई ऑफ यूरी हाईलाइटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट. कुछ भी नहीं नेगेटिव हुआ करता उसका, कुछ नहीं. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. बल्कि बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि बहुत बढ़िया काम किया उसने. नेगेटिव करने के बाद, किसी की जान लेने के बाद भी he was feeling proud. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको टेंशन इस बात की हो रही है, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है, कि अथॉरिटीज ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अब ऐसी लड़ाई दोबारा ना हो. अगर ऐसी वायलेंस दोबारा क्रिएट हुआ, थिंग्स विल बी नेगेटिव ऑर्डर. उसी को टेंशन समझ रहा है वो. जबकि ऐसे बच्चे को तो बड़ी हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए जिस बच्चे ने किसी की जान ली. So I think crystal clear up to this particular point. Just look at the level. Just look at the administration of that particular country. His only worry is that authorities have told him. Authorities होती हैं the persons or the party who just look at rules and regulations. उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि अब दोबारा लड़ाई नहीं करनी, दोबारा लड़ाइयों में इन्वॉल्व नहीं होना. I think you are crystal clear so far as word use is concerned. He's upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Just look at the extreme level of negativity of that guy. कि उसके अगेंस्ट नेक्स्ट एक्शन नहीं हुआ करता ना, कि जो गलत करता है उसके अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, पर्टिकुलरली जो वायलेंस क्रिएट करता है. तो अब वो बच्चा जो इतना नेगेटिव कर चुका है, जिसने इतना इतना बड़ा नेगेटिव जो है एक्शन लिया है, वो क्यों अपसेट है? वो इसलिए अपसेट है कि मेरी बॉडी पे एक भी निशान नहीं पड़ा उस लड़ाई के बाद, जो उसने उस बच्चे को मारने के लिए लड़ाई किया था, ताकि मैं एक दिखा तो सकूं कितने लोगों को अपनी पूरी लाइफ, जो बची हुई लाइफ थी, नेक्स्ट लाइफ में, फ्यूचर में, द रेस्ट ऑफ लाइफ हिज लाइफ, मतलब फ्यूचर में बैज ऑफ ऑनर के रूप में दिखा पाऊं. यानी जस्ट लुक एट द एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिविटी. कहते कि वो बच्चा इसलिए मतलब बहुत ज्यादा हार्श हो चुका है क्योंकि किसी ने एक्शन नहीं लिया. नेगेटिविटी शुड बी किल्ड इमीडिएटली. और जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको इलेबोरेट होने से पहले ही एक्शन लेना चाहिए. तो यहाँ पे वो बच्चा देखिए, उसका उसका एटीट्यूड देखिए. वो अपसेट इसलिए कि उसकी बॉडी पे उस लड़ाई के बाद एक भी स्कार होता है, जब दाग पड़ जाता है, कोई निशान पड़ जाता है, कोई निशान नहीं पड़ा ताकि सारी जिंदगी घमंड से कह सके कि हाँ मैंने उसको मारा था. बैज ऑफ ऑनर, यू आर क्रिस्टल क्लियर. वो उसको रिस्पेक्ट का सिंबल मान रहा था, जो कि एक नेगेटिविटी का सिंबल होता है. So now you are able to look at the level of that particular guy, level of administration of authorities, particular area. Hook, exclaimed Albert. And these are the students. Hook word is used to highlight negative point or negativity. Exclaimed Albert. And these are the students. तो ये students हैं. स्टूडेंट्स क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, इसके भी पीछे एक नेगेटिविटी है. बिकॉज अथॉरिटीज आई थिंक वर नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शन व्हाइल दिस पर्टिकुलर हैपनिंग हैड अकर्ड. तो आप इसको समझ सकते हो कि वायलेंस ऑफ एनी काइंड कैन नेवर बी कंसीडर्ड गुड, चाहे कोई भी हो. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. हुक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन क्यों है? यानी कि यू हैव टू लुक एट, ये नेगेटिव के लिए बोल जाता है. हम कहते हैं ना कि मतलब घटिया हरकत के लिए यूज किया जाता है, कि ये इतनी घटिया हरकत उस बच्चे की, जिसने की इतनी नेगेटिविटी करने के बाद. One day said Yuri. Yuri was highlighting very fine point here. And Yuri, आप समझते हो कि cousin of Albert Einstein. Saying एक दिन स्टूडेंट बनेगा, तुझे भी एक दिन स्टूडेंट का टाइटल मिलेगा. You will be able to look at this particular point. Now next step, look at page number 27. Now look at the inverted commas.
I doubt it, said Albert glumly. Again, inverted commas. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. Just look at the reply of Albert. कौन से पॉइंट की रिप्लाई है? जब उनके कजन यूरी उसको कहते कि बेटे तू भी एक दिन स्टूडेंट बनेगा. तो स्टूडेंट बेसिकली जब यानी कि बहुत बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज लेवल का हो जाता है, यानी कि कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट किया जा रहा है. अदरवाइज ही वाज स्टूडेंट राइट नाउ ऑल्सो. स्कूल में पढ़ता था, जो स्कूल में पढ़ता है उसी को भी स्टूडेंट कहा जाता है. लेकिन यहाँ पे किस स्टूडेंट की बात किया जा रहा है? जो स्टूडेंट जब बड़ा हो जाता है, जब कई जो नेगेटिव फैक्टर होते हैं, नेगेटिव स्टूडेंट्स होते हैं, दे क्रिएट ट्रबल्स. कॉलेज में जाओगे तो थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट. What you will be learning in the school, you can be able to utilize those life skills and value points at your college only. तो अगर बेटे सिस्टमेटाइज्ड लाइफ जीना है, you should be very very careful about your school education. Maybe online, maybe offline. So we are not able to get school life again. I think you are crystal clear. So just come to the basic point. I doubt it, said Albert glumly. यहाँ पे glumly होता है जब इंसान मुंह में बोल रहा होता है इरिटेशन. तो कहते हैं कि मुझे तो डाउट है कि मैं कभी स्टूडेंट बन भी पाऊंगा क्या नहीं. स्टूडेंट यानी कॉलेज स्टूडेंट हियर. आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट. ही वाज रिप्लाइंग यूरी. यूरी ने कहा था कि बेटे तुझे भी एक दिन स्टूडेंट बनना, फिर देखेंगे कि तू वायलेंस क्रिएट करता है या नहीं. यानी कि स्टूडेंट जब बच्चा 18 ईयर ओल्ड हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, और यानी कि बेसिकली जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, जब जिनको मॉरल वैल्यूज नहीं होती, जिनके पेरेंट्स या स्कूल से कुछ नहीं सीखा होता, they create troubles. Automatically you are crystal clear up to this particular point. तो कहते हैं कि मुझे तो डाउट है कि मैं पता नहीं कॉलेज जा भी पाऊं या नहीं, कॉलेज स्टूडेंट बन भी पाऊं या नहीं. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. तो यहाँ पे